Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ आज खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के शेयर बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। The headlines that we are tracking this evening: inflation based on wholesale prices falls to a 10-month low of 2.76% in January over the previous month due to ease in food and fuel prices. Sensex declines for a sixth session in a row to settle at 35,876. Nifty closes below the 10,750 level. And Brent crude prices rise to $64.50 per barrel. खाद्य और ईंधन पदार्थों के दाम घटने से थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जनवरी महीने में कम होकर 10 महीने के न्यूनतम स्तर 2.76% पर आई। घरेलू शेयर बाजार में लगातार छठे सत्र में गिरावट। सेंसेक्स 35,876 पर हुआ बंद। निफ्टी 10,750 अंक के स्तर से नीचे आया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $64.50 प्रति बैरल के पास पहुंची। First story that we are tracking is about the WPI data that's come in today. Inflation based on wholesale prices fell to a 10-month low of 2.76% in January over the previous month on softening prices of fuel and some food items. According to government data released today, the wholesale price index WPI-based inflation stood at 3.8% in December 2018 and 3.02% in January 2018. Inflation in kitchen essentials like potato, onion, fruits and milk softened in January over the previous month, the data revealed. The retail inflation released earlier this week declined marginally to 2.05% in January over the previous month on continued decline in food prices including vegetables and eggs. Rajiv, the retail inflation making a 19-month low and the wholesale inflation making a 10-month low and very close to the lower tolerance limit of RBI of 2%. They look at the 2 to 4% as a range of inflation. How would you see this as an insight from a market specialist? See, there are two aspects to it. One is, of course, there is a clear indication that in the last 3-4 years there are some structural changes which have come and because of which the inflation is likely to remain low. I mean, except there will be period seasonal factors will bring in. As far as these numbers are concerned, I think partly they are being reflected the drop in oil prices. So it takes a time lag to reflect in the inflation numbers. But as the third headline is, the oil prices again start moving. So there is a possibility that probably this is the end of that downward spirals will stabilize and sometime we might see a small uptick. As far as market is concerned, I think let's see how the oil prices now at 65 or if they move to 70, how they impact. And if there is no major spike, then I think there is another rate cut coming. Probably April meeting, we might see a rate cut if inflation continues to be at this level. What we have to look into is this an indication that there is a certain segment which requires more push, in terms of pushing this thing, or it's something like a cyclical effect which is going to get over. Third part of this would be that next year at the same time, because of the base effect, low base, it might be high. We are going to see kind of a spike. So remember, all these macro numbers, base effect is very important, and on a standalone basis they don't mean anything. Even the base effect doesn't mean anything. What we have to see, what is a trend, a longer term trend, and as far as inflation is concerned, I think the things are going to remain under control. I mean, I don't know whether RBI is going to be very happy about it, but at least they will not be worried too much.
But does it indicate another rate cut possibly before April? Yes, I think probably April. And look at the way the bond yield have behaved today after the numbers came in. That's a clear indication that there is a possibility that we might see. राजीव, यदि हम इन तीनों आंकड़ों को, यानी 2 आंकड़े मुद्रास्फीति के और एक आंकड़ा जो आईआईपी के जो आए हैं हाल ही पिछले इसी सप्ताह 2 दिन पहले मंगलवार को, वो क्या दर्शा रहे देश की वृहत आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए? देखिए, एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन था। फिर मैं वो इसी बात पे आऊंगा कि एक महीने या 2 महीने या इनफैक्ट जब आप एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि हुआ है इन टर्म्स ऑफ जीएसटी, तो कुछ महीने के जो नंबर हैं उनमें वॉलेटिलिटी होगी। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हुए हैं। अगर आप काफी साल पुराने उठा के देखेंगे किस हिसाब से कैलकुलेट होता था, एक जमाना था कि कंपनी विल नॉट इवन बॉदर के वो आपके सवाल का जवाब दे दे, मतलब अगर कोई मांगता था, वो नहीं है। सो द क्वालिटी ऑफ डेटा हैज in terms of IIP numbers, वो improve हुआ है. But it's going to take time before it starts shown in a trend. As far as IIP number are concerned, the whole cycle जो पूरा festive season late आया, जी, उसकी वजह से पूरा का पूरा चेंज हुआ. Then there was a I think numbers बेहतर होते अगर जो अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में जो लिक्विडिटी का इशू हुआ बिकॉज ऑफ IL&FS वो नहीं होता, बिकॉज उसको सॉर्ट आउट होने के प्रोसेस में है. वो कुछ चीजें क्रेडिट मार्केट में थोड़ा सा इश्यूज अब भी है, लेकिन जो फियर फैक्टर था वो थोड़ा सा कम हुआ है, पर पूरी तरह से खत्म हो गया वो नहीं है. बिकॉज अभी भी देयर इज एन इशू ऑन द बैलेंस शीट, द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज. अब करें तो विश्वास किस पे करें? But would you say in the last 1 odd year the balance sheets have become more trustworthy? I think they are under the process of now, becoming more trustworthy. Now because the person who's signing the balance sheet has a liability. अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी saw a lot of auditors resigning last year. There was change. There is a person who is signing the balance sheet has to be much more responsible. That is why that was the reason why some of the auditors decided not to sign a balance sheet, and there was some accident, which I would not say accident, but I think good thing happened in stock market, and some stock lost 70% of their value. So this is a cleanup process. It takes time. It brings pain to some people who obviously deserve that kind of pain. तो वो चलेगा थोड़ा टाइम. राजीव, आप यानी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि पारदर्शिता बरतने का और नियमों को लागू करने का जो नया पैमाना तय हुआ है उससे लाभ हुआ है. बाजार किस हद तक लाभान्वित होगा? यदि हम लंबा अवधि देखें, 1-2 साल की अवधि लें, तो उसमें किस तरह का परिणाम हमें देखने को मिलेगा कंपनियों के परिणाम पर? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ समय और ये प्रोसेस चलेगा क्लीन अप का. उसमें क्या होगा कि जो कंपनी इस पूरे हलचल से निकल के आएगी उसके लिए कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, बिकॉज उसकी अर्निंग पे विश्वास होगा. सो एज अ रिजल्ट उसकी वैल्यूएशन हो या कॉस्ट ऑफ फंड हो या इंप्रूवमेंट हो वो बढ़ जाएगी. तो हर फील्ड में जहां पे मान लीजिए 20 कंपनी, लेट्स टेक एग्जांपल एनबीएफसी हैं, अगर वहां 30 एनबीएफसी हैं तो उसमें से जो एक टोपी घुमा रही थी एक दूसरे के सर पे ऐसे करके, उनमें से कुछ खत्म हो जाएंगी. जो बचेंगी, जो एक्चुअल जेन्युइन बिजनेस करती थी, जिनका बेस था, जिन्होंने सही रिस्क मैनेजमेंट लिए थे, वो सरवाइव करेंगे. और जो कंपनीज वो जो मार्जिन छोड़ेंगी, जो कंपनीज बंद होंगी या जिन अपने प्रेशर के चक्कर में या किसी वजह से भी उनका मार्केट जो है उन कंपनीज के पास जाएगा. सो देयर विल बी अ क्वालिटी. 20 मान लीजिए 30 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 30 का, 30 है, उसमें से मान लीजिए अगर 10-15, तो जो बाकी 20 या 10 है उनमें से क्लीन अप के बाद जो बचेगा दैट विल बी मच बेटर. We'll continue our discussion with Rajiv, but after a short commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया. सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया. ओहो, तो ये बात है. हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे. बड़े भैया. छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. आइए अब चलें शेयर बाजार की ओर. पहले नजर डालते हैं घरेलू शेयर बाजार पर, जहां लगातार छठे सत्र में आज गिरावट का दौर देखने को मिला.
आईटी, मेटल और एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की अच्छी खासी बिकवाली की गई। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 158 अंक घाटे के साथ 35,876 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 48 अंक कम होकर 10,746 दर्ज हुआ। लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में आज चमक देखने को मिली। बृहत बाजार में रौनक बनी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.52% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.17% ऊपर उठकर बंद हुए। Continuing its fall for the sixth straight session, the benchmark BSE Sensex today dropped 158 points, led by losses in IT, metal and energy stocks amid sustained foreign fund outflow and lackluster global cues. The broader markets outperformed key indices, with the BSE Mid-Cap Index rising 0.52% and the BSE Small Cap gaining 0.17%. The Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 158 points to end at 35,876. The Nifty at the National Stock Exchange also fell 48 points to settle at 10,746. Top losers in the Sensex pack include Bharati Airtel, Infosys, Asian Paints, RIL, Coal India, HDFC Bank, HDFC, TCS, ONGC and M&M, falling by up to 3.1%. On the other hand, Yes Bank was the biggest gainer, rallying 30.7% after the company said that the RBI had not found any divergence in the asset classification and provisioning done by the lender during 2017-2018. Other gainers include Tata Motors, Sun Pharma, IndusInd Bank, Bajaj Finance, ICICI Bank and Hero MotoCorp, rising by up to 3.2%. Selling was more pronounced in oil and gas, IT, metal, PSU and state-run oil marketing company stocks that dragged the key indices into the negative territory. Energy stocks cracked as fresh concerns about rising crude oil prices resurfaced, with Brent crude oil futures zooming 1.3%. Sector-wise, the BSE Oil and Gas Index emerged as the worst performer by losing 2.1%, followed by IT down 1.3%, Tech down 1.1%, PSU down 0.8%, Consumer Durable 0.4% and FMCG down 0.1%, while Bankex, Auto, Capital Goods, Healthcare, Realty, Infrastructure and Power indices managed to end in the green, rising by up to 0.8%. We were talking before the break about the need to believe the balance sheets. So would we see more incidents like this, as the one private bank that we saw surging by almost 31% in one day, which is probably unheard of in the last 10 odd years? No, see, that was a very different issue. See, that was about the fear that there are something which has been hidden by the previous management. A new management is going to take over. MD is going to take over, and probably he's going to do a kitchen sinking when the next time result comes. Now that there is no divergence, there is the fear that there is no kitchen sinking, and also we should understand there is a technical reason. A lot of this up move is also because of the short covering. Because the stock has been falling, there were a lot of short positions in the stock. And it is the short covering by the BS which probably is the reason why we saw a gap up opening and the fear that, okay, the things might change and we see. But the probability of this kind of a positive upside surprise would be there, but in a very few select companies. If there are 10 companies... Not as extreme as this. Not as extreme as this, and if there are 10 companies which are under this thing, probably maybe in one or two cases we might see. राजीव, छोटी और मझोली कंपनियों पर आज हम ध्यान दें तो जो बृहत बाजार है उसमें तेजी देखने को मिली है, क्या मुख्य कारण रहे? देखिए, मुख्य कारण एक तो ये है कि बहुत दिनों से बहुत चीज अगर देखिए इंडेक्स तो घट रहा था, पर जो मिड कैप स्टॉक्स हैं और इंडेक्स है वो ज्यादा घट रहे थे। तो कोई चीज अगर 100 रुपए से लेके अगर 50 रुपए तक आ गई है, उसके बाद 50 से 55 हो जाती है, तो उसको बढ़ना नहीं कहेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डेड कैट बाउंस। नाउ लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो जो एक्सट्रीम वैल्यूएशन जो हुआ था 2017 का, वो धीरे 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 करेक्ट होते 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 अब उस लेवल पे आ गया कि उतनी सेलिंग प्रेशर या उतना एक्सेसिव वैल्यूएशन नहीं है। आज भी चीप वैल्यूएशन चीप नहीं है, लेकिन एक्सेसिव जो अति हो गई थी कि वैल्यूएशन तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल कहीं भी कहीं चले गए थे, वो नहीं है। तो देरा एक फेजेस आएंगे जहां पे कुछ पैसा जो है वो मिड कैप और स्मॉल मिड कैप में, नॉट स्मॉल कैप, मिड कैप में जाएगा। सो देखने की बात यह है कि थोड़ा सा सस्टेन करता है या नहीं करता। इनफैक्ट कल भी अगर आप देखेंगे तो कल भी थोड़े टाइम के लिए मिड कैप जो इंडेक्स है उसकी जो मार्केट ब्रेथ है वो बेटर थी, आज भी बेटर थी। आज इंडेक्स घटा लार्जली बिकॉज
3 या 4 स्टॉक जो कि पिछले 5-6 दिनों से बेहतर कर रहे थे और इंडेक्स को एक लेवल पे रख रहे थे, वो थोड़ा सा कम हुए, तो इसकी वजह से इंडेक्स प्रोबेबिलिटी है कि जो छोटे ट्रेडर हैं आज वो शाम को शायद ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनकी मार्क टू मार्क जो है उनका आज नहीं आया होगा। राजीव, संसद के सत्र का अवसान हो चुका है, देश चुनावी मोड में धीरे धीरे जा रहा है। ऐसे में हम समझना चाहेंगे कि विगत अवधियों में जो बाजार की दृष्टि से अपेक्षित सुधार हुए हैं, जैसे दिवाला कानून बना या जैसे कह लें कि जीएसटी लागू हुआ, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा कारक होगा जो देश की अर्थव्यवस्था को बाजार के नजरिए से लाभ देने में सक्षम होगा? दोनों, सब एक पर्टिकुलर चीज नहीं कर सकती, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। द फैक्ट आईबीसी, ये नहीं है ना कि अब ले लिया लोन, उसके बाद पुरानी कहावत है कि हिंदुस्तान में प्रमोटर कभी बीमार नहीं होते थे, सिर्फ कंपनियां बीमार होती थी। दैट इज वाई वी हैड अ बोर्ड कॉल्ड BIFR। सो वो खत्म है। अब तो अगर आपने लोन दिया, नहीं दिया या क्या दिया है, तो देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रमोटर ऑल्सो। लूज योर कंपनी नाउ। एक चीज और जो अभी जैसा कि भी रवि बात कर रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर साइनिंग द बैलेंस शीट, तो ये नहीं है कि ओवर इनवॉइसिंग करके आपने ले लिया, प्रोजेक्ट लोन ले लिया, उसके बाद पैसे वो पहले साइफन ऑफ करे, उसके बाद प्रोजेक्ट लगता रहेगा, देखेंगे। अगर आप 94-95 का पीरियड देखेंगे तो एक ब्रिज लोन का कंसेप्ट होता था, वो सब पुरानी चीजें हैं, वो खत्म। तो क्लीनअप जो है वो तीनों चीजों को मिला के जीएसटी, अगर आपका बिजनेस बेस्ड ही इसी चीज पे है कि आप टैक्स आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस फिर बिजनेस क्यों? तो आप टैक्स आर्बिट्राज कर रहे थे, इसलिए आपके प्रॉफिट मार्जिन थे जो सरकार को जाना था वो आपकी जेब में आ रहा था। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग विच प्रॉब्ली विल मेक आवर इकोनॉमी ग्रो एट अ फास्टर एट एन मोर कंसिस्टेंट पेस। प्रॉब्लम एक ये नहीं है कि 7.5 है या 7.25 है या 8 है, प्रॉब्लम है कि कितने साल विदाउट वॉलिटिलिटी आप एक साल 7%, 7.5 आए, उसके बाद 6.5 आ गए, फिर 8.5 हो गए, वो नहीं। एक कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है जिसकी वजह से वैल्यूएशन जो है उस कंट्री को एज अ कंट्री की जो रेटिंग है वो इंप्रूव होती है। दैट इज वेयर प्रॉब्ली आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इज गोइंग टू वर्क, नॉट वन स्टैंड अलोन थिंग. If you look at today, we saw an uptick in the mid cap as well as small cap. Normally, when small investors are advised, they are advised to go through the mutual fund route. Yeah. Now, if you see, now mutual funds have sustained almost an 8,000 crore rupees monthly inflow into SIP. And are we seeing something that we call as flight to safety, where all the money is chasing the 10 mega caps and probably the large caps, broadly speaking, and the real opportunity now lies probably in the mid cap and small cap? Would you recommend that a normal mutual fund investor looks for a mid cap fund instead of a large cap fund? See, in large cap also there has to be a distinction. The problem with the large cap fund is that a fund manager cannot have a more than an X percentage of weightage to that particular stock. But what has happened is that 7 or 8 stocks have gone up, and and even because a fund cannot invest more than a certain percent of its AUM in those particular stocks, so even those funds are going to underperform. But as far as the mid and small cap is concerned, I think there is still a room for correction in valuation. So if you are looking for mid and small cap, probably it's a time to start the SIP. I mean, if you have not, I think most of the people are now into the SIP mode. But in a year which may or may not may be volatile, SIP route probably is the best route. So if I have an SIP in a large cap fund, should I move to a mid cap SIP? No, I think if there is, it's not about that you should move away from this. If you have additional this thing, the fresh money you're going to put in, instead of moving away, any fresh money you can put in. Put some fresh money into mid and small cap. But look at the quality of the fund. Okay. Because there is a major difference in the quality of one fund to another. यानी निवेश कीजिए तो सोचकर कीजिए, समझकर कीजिए और छानबीन अच्छी तरह से कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपके लक्ष्य क्या है, उसी दृष्टि से आगे बढ़िए। यहाँ श्रोताओं, हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अ सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट थ्रू द NSE GoBid मोबाइल ऐप। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट ₹10,000। Download the app today. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां मिला जुला रुख आज देखने को मिला है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1.1% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% ऊपर उठा। उधर जापान में बिना किसी उतार चढ़ाव के निक्केई सूचकांक बंद हुआ
बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% और हांगकांग का हैंग सेंग 0.2% नीचे आकर बंद हुए। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.3%, फ्रांस का कैक 40 0.8% और जर्मनी का डैक्स 0.4% ऊपर कारोबार कर रहे थे। If you look at the U.S. market, Wall Street today extended its gains as investor optimism was stoked over hopes that the United States and China could iron out a trade deal, and tame inflation data suggested that Fed would hold interest rates steady in the near term. The Dow Jones Industrial Average gained 0.5%, S&P 500 climbed 0.3%, and Nasdaq Composite Index added 0.1%. Two important dates, Rajiv, one the 21st February, the FOMC meeting, and 1st March, which is the deadline for the tariffs to go up from 10 to 25%. How do you see the U.S. market and the other Asian markets in that perspective? See, I think the Fed issue is most likely resolved. I mean, I don't think so the Fed is going to go aggressive because they've clearly indicated that they don't want to be over-ambitious in terms of raising rates. As far as the 1st March is concerned, yesterday what the news which has come out is positive, but you never know, because of the nature of negotiation, everybody posturing, the kind of leaks which are done in media, and everybody tries to do X, Y, Z. I mean, that is something different. But if I broadly look at it, I think probably we are going to go to some, I don't think so we're going to see a full solution. I think we're going to see an extension of the deadline further with saying, okay, we are going to further continue our negotiations. Until that time it happens, we maintain the status quo. So that way also probably it will be taken positively. As far as Fed is concerned, I don't think so that's going to be an issue with the market, either with the US or with the emerging markets. राजीव, यदि हम यूरोपीय अर्थव्यवस्था की ओर आपका ध्यान खींचना चाहें तो वहां जो ब्रेक्जिट पर ताजा स्थितियां हैं, उसके अलावा जो 2-3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, फ्रांस, जर्मनी, उन्हें ध्यान में रखते हुए यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाती दिख रही है? मनोज जी, मैं आपको एक ऑनेस्ट एडमिशन बोलूं, मुझे भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी मुश्किल हो जाती है, आप मुझसे यूरोप पूछ रहे हैं. To be very honest, that's another deadline, March 29th, when the only thing whatever I see is that the fact is that there was expectation कि वो बढ़ जाएगी 2012-13 में, वो नहीं हो रहा. पर उनके जो स्टैंडर्ड्स है ना डिस्क्लोजर्स के, वो इतने स्ट्रांग और क्लीन है कि उनके यहाँ पे अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी बढ़त होती है, मान लीजिए कि 3 क्वार्टर अगर वो नहीं बढ़ा तो उसको रिसेशन कह देंगे. तो अगर आप पिछले 8 सालों में देख लेंगे, जब से उन्होंने अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू करा था, बॉन्ड बैंक होगा, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा. हाँ, ब्रेक्जिट एक चीज होगा जो चेंज करेगा चीजों को, पर वो भी उस पर क्वेश्चन मार्क होगा, नहीं होगा और किन टर्म्स होगा, बट दैट विल लीड टू अ वेरी मेजर चेंज एटलीस्ट फॉर द British economy, and that probably will happen to lead to a problem in the currency market. तो currency market में volatility आ सकती है और कैसे वो pan out करता है. Many of the research houses are looking at a global slowdown in 2019. Do you echo that sentiment? I don't see if there is a consensus rate, then I think if there is a slowdown, I mean, what is that what we are expecting? I mean, see, again, research houses, all those research reports which come, they are justification for, and there is justification for anything in this world. So those are written justification for why this is happening, why the price is going to come down. The fact is the bond yields have moved up. There is a fear that there are going to be problems. So I think those research reports, I take them with a pinch of salt. यानी लगातार कह लें कि हमने स्थितियां देखी हैं, जबकि आंकड़े कुछ थे और परिणाम कुछ निकला. 2008 को देखें तो किसी को नहीं पता था कि ऐसा संकट आने वाला है. बहरहाल राजीव, आपने चर्चा की मुद्रा बाजार में उथल पुथल आने के आसार बन सकते हैं. हम श्रोताओं को आज जो अपनी भारतीय मुद्रा है उसकी क्या स्थिति रही उसकी जानकारी देते हैं. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 35 पैसे कमजोर हुआ, 71 रुपए 16 पैसे दर्ज हुआ. इससे पिछले सत्र में ये 9 पैसे कमजोर होकर 70 रुपए 81 पैसे के स्तर पर था. Another important factor that affects the Indian markets and the global markets is oil. And oil prices today inched up, buoyed by hopes that potential progress in the latest Sino-US tariff talks would improve the global economic outlook. Brent crude prices were trading around $64.50 per barrel, while WTI prices were at around $54.40 per barrel when reports last came in. So how you mentioned this, that you think that the ideal price for oil is to be less than $70, and currently we are looking at $64, although it was $62 a couple of days back, so it's moving up.
So do you think it will be below that level that you have said? See, that has to be watched for, and the probability is that it might spike up. If you look at any time there is a positive news which comes on the China and the US thing, the first thing to spike up is oil prices. There is no reliable data on what kind of output cuts are there. Apparently there are some reports which say that the output cut is more than what OPEC has suggested, but that seems, probably a very situation which will only last for a few days, because everybody, when the prices are high, every country wants to pump and sell in and collect more money because they don't want to wait for. That is one area. If there is sudden spike, because there is a lot of liquidity in the global market, any asset class which starts moving up, it see a rush of money. So whether the way last time oil prices moved up and the way they fell down, it clearly shows that it was not because of the demand. It was because bahut sara paisa udhar gaya, and then all of a sudden the moment the prices stopped rising, that money moved out. Now how much of that speculative money is going right now rather in would decide on what kind of spike we see. But I think there's a possibility of an upward spike in oil prices going forward, and especially during the phase when we see announcement regarding China and US settling their issues. राजीव, रुपए को लेकर आप क्या यानी धारणा रखते हैं? रुपया किस रूप में प्रभावित होगा? और रुपया ही नहीं बल्कि कह लें जो विकासशील देशों की मुद्राएं हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी मुद्रा कहां तक टिकेगी? देखिए, यूएस फेड के डिसीजन के बाद और जो जैसे वहां पे भी बॉन्ड डील थोड़ी सी स्टेबलाइज करी है, आई डोंट थिंक सो, एक्सेप्ट एक ब्रेग्जिट का इशू है वो रहेगा कोई बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट इंडिया में क्या आते हैं, दैट विल इम्पैक्ट रूपी. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज गोइंग टू बी एनीथिंग मेजर ड्रामेटिकली रॉन्ग हैपनिंग विद आवर रूपी इन एटलीस्ट टिल द टाइम द इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट. यानी कुल मिलाकर अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपया स्थिर बना रहेगा. उनकी मूवमेंट लार्जली रहती है यूएस फेड के हिसाब से रहेगी, और वो क्योंकि थोड़ा सा डविश है तो उनमें भी बहुत ज्यादा कोई उथल पुथल की चांस नहीं है. हाँ, चाइनीज करेंसी में क्या होता है आफ्टर द अनाउंसमेंट, वो एक हफ्ते का पीरियड होगा जहां थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ सकती है. आइए अब चलें सर्राफा बाजार. दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही. लगातार चौथे स्तर में सोने का मूल्य घटा और आज 50 रुपए कम होकर 34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी 150 रुपए घटकर 40,650 रुपए प्रति किलो रह गई. कारोबारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक रुख के बावजूद घरेलू बाजार में मांग कम निकलने से सोने के मूल्य में नरमी बनी रही. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. धन्यवाद मनोज. Thank you, Rajiv. And now before we close, a reminder of the headlines. Inflation based on wholesale prices falls to a 10-month low of 2.76% in January over the previous month due to ease in food and fuel prices. Sensex declines for a sixth session in a row to settle at 35,876, and Nifty closes below the 10,750 level. And Brent crude prices rise to $64.50 per barrel. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.